Hello friends, welcome to another video of the Indian Freelancer YouTube channel. My name is Stan. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WordPress को लेके How to start blogging using WordPress. So I'll talk about all the things that you would need to get started on WordPress. तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा. Thanks a lot for watching. Welcome back. So right now I'm in Dharamshala and the building that you can see behind me is the Vidhan Sabha, where the Legislative Assembly is there. Okay, so Dharamshala is actually the winter capital of Himachal Pradesh. तो आधा समय 4-5 महीना जो इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो यहाँ पे बैठता है, ठीक है, इस बिल्डिंग में, और बाकी समय इज देयर इन शिमला. ऑलराइट, so let's get started with the agenda of our video today. Now the question is, what are the things that we would need to get started while blogging on WordPress? Okay. Now, as you know, while you get started with blogging, the first thing that you would need is a niche. You need to select your niche. Niche is a topic where which you are going to write your blogs on, write your content on. Okay. तो आप एक blog में normally you should have one topic or one niche, and you should write only about that, because that is what will take your blog high up in the ranking, in the Google ranking. Okay, so it can be sports, it can be cooking, it can be travel, it can be anything that you choose, anything that you are an expert of. ठीक है, तो आप वो niche choose कर सकते हो. Once you have chosen the niche, then it's time to get the domain. Now domain आपको ऐसा एक लेना है which is relevant to your niche. Like if you talk about sportskira.com, or if you talk about cricinfo.com, so these are the websites which talk about cricket or sports in general, right? So that's how you should also choose a domain which is relevant to the niche that you have chosen. ठीक है, domain होने के बाद the next thing that you need is hosting, where you will put your WordPress वेबसाइट जब आप बनाओगे तो उसमें कुछ कंटेंट रहेगा, जैसे वेबसाइट का इमेजेस रहेंगे, उसका कोडिंग रहेगा, कुछ फाइल्स रहेंगे. सो कहाँ रखेंगे उस फाइल्स को? वो सब रखने के लिए यू नीड टू होस्ट देम ऑन सर्वर प्लेस, ठीक है, सर्वर स्पेस. तो दैट इज़ व्हाट इज होस्टिंग ऑल अबाउट. तो आपको होस्टिंग खरीदना है. आप अगर डोमेन खरीदना चाहते हो, यू कैन गो टू GoDaddy, यू कैन गो टू बिग रॉक, और यू कैन गो टू नेमचिप. Okay, and for hosting you can go to Hostinger, HostGator, SiteGround, and also Bluehost. Now Bluehost is something which WordPress also recommends. ठीक है, WordPress recommend करता है कि आप उनका जो वेबसाइट्स वगैरह हो वो आप Bluehost में होस्ट करो, ताकि सबसे वो कंपेटेबल बहुत ज़्यादा है WordPress से. ठीक है, तो उसका एक लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में. आप वहाँ से अगर रजिस्टर करते हो Bluehost के साथ, सो you will get a very nominal price for your package, whatever package you choose. और एक additional benefit ये है कि you will get a free domain with Bluehost. ठीक है, तो आपको डोमेन अलग से खरीदने का ज़रूरत नहीं है. as long as you have the hosting with Bluehost, your domain will be free with them. ठीक है, वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है. so use the link in the description and register yourself with Bluehost. Now once you have got the hosting, you will need just a click of a button if you are going with Bluehost to install WordPress. ठीक है, अगर दूसरे कोई उसमें जाते हो, कोई होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ जाते हो, तो उसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है कभी कभी, लेकिन नॉर्मली हर होस्टिंग प्रोवाइडर जो है उसमें वन क्लिक बटन रहता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका WordPress इंस्टॉल हो जाएगा. WordPress इंस्टॉल होने के बाद what are the things that you need? Okay, now the first thing that you need after getting WordPress installed on your hosting is a theme. तो आपको एक थीम, ऐसा एक थीम चाहिए which will help you in building your brand, your online, I mean online जो आपका प्रेजेंस होगा उसको बिल्ड करने के लिए, उसको सजाने के लिए आपको एक थीम चाहिए जो कि आपको आपके निश के साथ, आपके वेबसाइट के साथ और आपके खुद के पर्सनैलिटी के साथ वो मैच करेगा. ठीक है, नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू create a blog, a simple blog, you can start with Wrighty. Wrighty is a good and simple theme which will get you started very quickly. तो Wrighty का स्पेलिंग है RWRITEE. ओके, सो यू कैन चेक आउट दैट थीम. और भी अच्छे अच्छे थीम्स है, जैसे एस्ट्रा है, फ्लॉक्स है, जैसे ओशन WP है. दोज आर ऑल्सो वेरी फेमस और पॉपुलर थीम ऑन WordPress. Once you have the theme, then you need to
गेट स्टार्ट विद द डिजाइनिंग ऑफ योर वर्डप्रेस ब्लॉग। और जब आप डिज़ाइन करोगे तो आपको छोटा छोटा 2-3 प्लगइन्स भी चाहिए होंगे, जैसे एसईओ के लिए एक प्लगइन चाहिए होगा, आपको स्पैम के लिए स्पैम ना हो आपके वेबसाइट में उसके लिए एक प्लगइन चाहिए होगा। ऐसा बहुत सारा प्लगइन्स आपको चाहिए हो सकता है। सो बेस्ड ऑन योर नीड यू कैन सर्च ऑन गूगल विच प्लगइन्स आर गुड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू कैन गेट दोज प्लगइन्स। नाउ once you are at this stage you are set and you can start building your website. अगर आप पहले से कभी वर्डप्रेस में काम कर चुके हो तो these are the things that you would need to get started, ठीक है। उससे इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस नहीं जानते, ओके तो अगर आप वर्डप्रेस उतना आप नहीं जानते और यू आर जस्ट एन एब्सोल्यूट बिगिनर, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ ए पेज बिल्डर। नाउ पेज बिल्डर क्या होता है? पेज बिल्डर इज अगेन ए प्लगइन which you can use with WordPress, and there you can just drag and drop elements on your page and you can build professional looking beautiful pages in very short time, ठीक है। तो I would suggest you to go with a page builder plugin like Fiverr is there, then we have WP Bakery, then we have Oxygen, then there is one called Elementor. So all these page builder plugins will help you in building your pages very easily and in very short time, ठीक है, very quickly. Now इसी को लेके Elementor plugin को लेके मैंने एक कोर्स बनाया रिसेंटली which talks about creating a web page or a landing page or even a websites using Elementor plugin on Astra theme, ठीक है। तो थीम तो आप चेंज कर सकते हो, मैं Astra ऐसे रिकमेंड कर रहा हूँ, बट यू कैन चेंज वट एवर थीम यू लाइक, but the main point in that course is to how to use a page builder plugin like Elementor and create those awesome looking pages, ठीक है। तो उस पेज का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से मेरे कोर्स में जा सकते हो और कोर्स में जो कोर्स का डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ सकते हो, जो प्रीव्यू वीडियोस वगैरह है वो सब देख सकते हो, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि इट कैन बी फ्रूटफुल फॉर यू, यू कैन एनरोल टू दैट कोर्स, ठीक है। एक जो लिंक मैं डालूंगा वो एक डिस्काउंट कूपन लिंक भी रहेगा उसके साथ, so you can use that discount coupon. And for the month of August I am keeping the course for free, okay। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री लिंक भी मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ अगस्त महीने के लिए है, आफ्टर दैट यू हैव टू बाय इट, ठीक है। ऑलराइट, तो आई हैव एक्चुअली लॉन्च दिस कोर्स सम टाइम बैक ऑन माय चैनल, उसका भी एक लिंक वीडियो आपको आप शायद देखे होंगे, 2-3 दिन पहले मैं अपलोड किया था। So that's all about getting started with WordPress, okay, or getting started with blogging on WordPress. अगर इसके relevant कुछ questions हैं आपको और अगर कुछ extra आपको जानना चाहते हैं तो please feel free to ask me on the comment section. I'll try to answer your questions there, or I'll create a new video if you have a something specific which needs more time, okay, so I'll create a new video on that as well, okay। So that's all I have in this video. Thanks a lot for being here. Thanks a lot for watching this video. अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, please go ahead and subscribe because I create this kind of videos which are very relevant and helpful for the freelancers and will help you in your journey as well, ठीक है। So thanks a lot for watching. This is Dan signing off from the Indian Freelancer. Take care. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.